intelligent students. Full stop, inverted commas, close. Now, dear student, the first question you will ask is whether the reporting verb is in past or present. यहां पे said है, तो इसका मतलब कि टेंस के अंदर जो is एम आर है इन्होंने चेंज होना है was या were में. दूसरा क्वेश्चन जो आप पूछेंगे कि ये जो कोटेड स्पीच है ये किससे शुरू हो रही है, फर्स्ट पर्सन से, सेकंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज स्टार्टिंग विद द थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन किसी और पर्सन में चेंज नहीं होता. सो द इनडायरेक्ट स्पीच वुड बी she said that they were intelligent students. Full stop. That they were intelligent students. Full stop. तो ये हमने एग्जांपल एक थर्ड पर्सन की भी इसके अंदर इंक्लूड कर ली है. Now moving towards the other aspect, which is the use of past tense. Dear student, याद रखें is एम आर was were में कन्वर्ट होते हैं, मगर जिस वक्त was और were आ जाए, was and were, they are converted into had और had been. इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. I will take the example of the same sentence. She said they were intelligent students. Now, dear students, एक्चुअली यहां पे पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ हुआ है वर्ब, मगर चूंकि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है तो इस वर्ब ने किस में चेंज होना है, हैड में चेंज होना है. सो इन दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वी चेंज दैट वर्ब इनटू हैड बीन. बीन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हैड के साथ हमेशा मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, और यहां पे चूंकि कोई एक्शन नहीं हो रहा था तो इसलिए मैंने एक हेल्पिंग वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर दिया. तो पास्ट सिंपल टेंस में यही मेन चेंजेस है कि पास्ट सिंपल इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. सो पास्ट परफेक्ट की भी एक एग्जांपल देख लीजिए. ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, it was raining. So this is the past continuous, और past continuous past perfect में change होता है. So the indirect speech would be, he said that it had been raining. Full stop. He said that it had been raining. तो was और were आपने मजीद had या had been में कन्वर्ट करने. सो अगर तो ऑलरेडी आपके पास वर्ब है had के साथ तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म been का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इस केस में हुआ. The last one is regarding the use of future tense. Again, he says, comma, inverted comma, I will be successful. Full stop, inverted commas, close. So dear student, सबसे पहले आपने ये देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब से है या said है. से है या सेड है, सबसे पहले आपने ये देखना. इट इज सेज, तो इसका मतलब है
ये विल जो है किसी टेंस में चेंज नहीं होगा, ये रिमेन द सेम, कोई टेंस चेंज नहीं होगी। हाँ, एक चेंज लाजमी है जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में होती है। तो यहां पे कोटेड स्पीच के अंदर देखिए कौन सा पर्सन, इट इज फर्स्ट पर्सन, एंड फर्स्ट पर्सन आई ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, सेज, एक्शन कौन कर रहा है, ही कर रहा है। सो द इनडायरेक्ट स्पीच वुड बी, he says that he will be successful, full stop। कॉमा, इनवर्टेड कॉमास इनडायरेक्ट स्पीच में आप रिमूव कर देते हैं। he will be successful। however, if I change the reporting verb into past, then what would be the indirect speech? He said that he, अब will किस में चेंज होगा? Yes, शहजाद, well done। will be changed into would। He said that he would be successful। So हमेशा आपने डियर स्टूडेंट अपने रिपोर्टिंग वर्ब को जो है मद्देनजर रखना है और उसके हिसाब से आपने जो है चेंजेस करनी है। So here we have seen the present tense, the past tense and the future tense। The rest of the changes will follow in the same way कि जब भी आपके टेंस के अंदर इज एम आर आएगा वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट होगा, डू नॉट या डज नॉट आएगा तो वो डिड नॉट में कन्वर्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होगी। कैसे? He said I like ice cream, full stop, inverted commas, close। यहां पे डियर स्टूडेंट देखे वर्ब इस्तेमाल हुआ है लाइक और बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसका मतलब लाइक ने सेकंड फॉर्म में चेंज होना है। और ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, इंसान की पसंद नापसंद बदलती रहती है। सो ही सेड दैट he liked ice cream, full stop। so first form of verb यहां पे हमने चेंज किया किसमें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में। अगर कोई चीज चेंज नहीं होगी, एग्जाम्पल अगर यहां पे लिखा होगा गॉड इज वन तो वो गॉड इज वन ही रहेगा, ही सेड दैट गॉड इज वन। सिमिलरली अगर यहां पे लिखा होगा एक जनरल ट्रूथ, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो वो यहां पे भी यही रहेगा, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। क्यों? बिकॉज इट्स अ जनरल फैक्ट। तो फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ चेंज नहीं होते हैं। स्टूडेंट यहां तक हमने बात की थी सिंपल सेंटेंसेस की, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। अब आ जाएं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ। Dear students, when it comes to exclamatory sentences, then the rule changes a bit differently। Remember, with exclamatory sentences, we never write the original exclamatory word। हम हमेशा उसकी जगह दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो उन जज्बात को बयान कर रहे होते हैं। For example, Sarfraz said, "Hurrah, we have won"। यहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये इसलिए है कि सरफराज ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद एक सादा स्टेटमेंट ही आ रही है, एक सादा स्टेटमेंट ही आ रही है जिसको हमने पुराने रूल्स के तहत चेंज करना है। बेटा सेट की जगह टोल्ड अब तब यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट होगा। अगर तो है ही सेड तो उसे ही सेड ही लिखेंगे। अगर होगा ही सेड टू मी तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ही टोल्ड मी से। ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए और टोल्ड की जगह टोल्ड के बाद टू भी नहीं यूज करेंगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सेड यूज होगा आपका एक्सक्लेम्ड के मानों में. So when it comes to exclamatory sentences, always remember that hurrah or the exclamation changes into exclaimed with joy. तो said की जगह पे आप क्या लगाएंगे? सरप्राइज exclaimed with joy that they had won. ये एग्जैक्टली उसी तरह चेंज होगा जिस तरह प्रीवियस सेंटेंसेस हमने चेंज किए थे. बी जो है दे में कन्वर्ट होगा, हैव हैड में कन्वर्ट होगा और वॉन की थर्ड फॉर्म भी वॉन ही होती है. Similarly, if there is another exclamatory sentences describing different feelings than the previous one, अफसोस का जिस वक्त या अफसोस का इजहार करे तो उस वक्त जो है अल्लास, ये आपका एक्सप्रेशन यूज होता है. सो सरफराज सेड, अलास वी हैव लॉस्ट. The indirect speech would be surprise exclaimed with sorrow. Surprise exclaimed with sorrow. आगे we have lost ने उसी रूल के मुताबिक चेंज होना जो हम पहले सेंटेंसेस में पढ़ चुके हैं. Surprise exclaimed with sorrow that they had lost. That they had lost. Next. जरूरी नहीं है कि आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सिर्फ हुर्रा या लास से हो. जज्बात के इजहार के लिए दूसरे अल्फाज भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान सेड, ओ माई गॉड, आई हैव टू पे अ ह्यूज लोन टू IMF दिस ईयर. सो ओ माई गॉड किस चीज का एक्सप्रेशन है? किन जज्बात का इजहार है? हैरानगी का, सरप्राइज का, वंडर का. So again, you will never write, oh my God, just like you have never written alas or hurrah in your indirect speech. So you will write in this way, Imran Khan exclaimed with wonder that. अब यहां से dear student वही पुराना फॉर्मूला की पे ये पुराना सेंटेंस है. It will observe the same principles of the basics of direct and indirect speech. Imran Khan exclaimed with wonder that I will be changed. I फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन हमेशा स्पीकर सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है. तो इसकी जगह पे जो आपने प्रोनाउन लगाना है which is he. Imran Khan exclaimed with wonder that he had to pay a huge loan to IMF that year. This that में कन्वर्ट हो जाएगा, now then में कन्वर्ट हो जाएगा, here there में कन्वर्ट हो जाएगा. There is a separate list. So dear students, these are the exclamatory sentences जिसके अंदर चेंज क्या है. इनडायरेक्ट स्पीच में आप कभी सेड नहीं लिखते. exclaimed with wonder, exclaimed with surprise, exclaimed with sorrow या exclaimed with joy लिखते हैं depending upon the feelings is के बाद आप इंफिनिटिव लगाएंगे. टू गिव हर वन ग्रेस मार्क. तो ये स्टूडेंट है, इसका जेंडर कुछ भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, एनीवन, बट गो फॉर एटलीस्ट वन. Now dear students, this is your test. Now tell me what would be the indirect narration of this imperative sentence. The husband said to his wife, iron my clothes. What would be your answer? To iron his clothes. Exactly. यहां पे जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप खुद से यूज करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं. सो कॉन्टेक्स्ट जो अवेलेबल है उसके हिसाब से रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, सिंपली टोल्ड भी हो सकता है. सो द हस्बैंड आस्क्ड या टोल्ड हिज वाइफ टू आयरन हिज क्लोथ्स. इट कुड बी रिक्वेस्टेड, इट कुड बी, मगर देखिए इसके अंदर टेक्निक फिर भी वही यूज हुई है. टू आयरन आपने टू यूज किया. एक्सक्यूज मी सर. जी सर, ये मैंने पूछना था कि जैसे हम यहाँ पे लिखा आ रहा है जनरल ऑर्डर द सोल्जर्स आ रहा है सर, अगर सेट की जगह से आ जाए,
say the students. जी, तो फिर जो है बेटा ऑर्डर्ड नहीं होगा, ऑर्डर्स होगा, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, रिक्वेस्ट्स होगा। ठीक है, मतलब सर ये रिक्वेस्ट हम इसको चेंज करेंगे और ऑर्डर को चेंज करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। बाकी जो है सेंटेंस वो एज इट इज ही चेंज होगा। टू अटैक और टू गिव हर वन ग्रेस मार्क, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगी, ये सेम ही है। ये से के साथ भी सेम है, सेड के साथ भी सेम ही है, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। So dear students, these are the imperative sentences. Now moving towards the last one, questions. तो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया डियर स्टूडेंट्स? वी हैव डिस्कस दी स्टेटमेंट्स, जिनको असर्टिव या आप डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। Then we discussed the exclamatory sentences. Then we discussed the exclamatory sentences. Then we discussed the imperative. सॉरी डियर स्टूडेंट, मेरे कीबोर्ड के साथ जरा मसला है, सो इसकी कीज कुछ काम नहीं कर रही हैं। एंड फाइनली वी शैल डिस्कस दी क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट, व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आपके सामने दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट आर दोस क्वेश्चंस? द फर्स्ट वन इज हाँ या ना में दिया जा सकता है, और दूसरे क्वेश्चंस कौन से हैं? दे आर WH क्वेश्चंस, यानी जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, व्हेन, ये इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं ये इससे स्टार्ट होते हैं। यस और नो वाले क्वेश्चंस कौन से हैं? ऐसे सवाल जिनके जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब बी से, यानी क्वेश्चन स्टार्टिंग विद इज, एम, आर, वॉज एंड वर, जो इनसे शुरू होते हैं सवाल। नेक्स्ट, क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब, टू फॉर्म्स। The question may start with does or it may start with did. Similarly, the third helping verb is have. Have से भी आपका सवाल शुरू होता है, और have की two inflections या two forms हैं, which are has and had. Which are has and had. इनसे जब भी सवाल शुरू होगा आप उसको जवाब हाँ में भी दे सकते हैं और ना में भी दे सकते हैं। फर्क क्या है? How would you convert it into indirect speech? जी बेटा, हाउ भी इंक्लूडेड है इसमें WH में, H से एक ही बनता है, हाउ ही बनता है। सो हेल्पिंग वर्ब की जी हम बात करें, क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट बन जाएगा, कैसे? दैट टीचर, जी यहां सेड किस में कन्वर्ट होगा? एग्जैक्टली, इट इज ऑलवेज आस्क्ड, ASKD। आस्क्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां सेड था, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी, तो मैंने यहां पे भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाई है। द टीचर आस्क्ड टू नहीं लगाऊंगा, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। जैसे टोल्ड के साथ आपने टू नहीं लगाया था, आस्क के साथ भी आप टू नहीं लगाएंगे। द टीचर
क्या इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है? If they were ready. जी बिल्कुल जी, हाँ या ना में इसका जवाब दिया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस में जब भी आपने कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करना है तो वो दैट से रिमूव नहीं करेंगे। ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हैं, आप हमेशा उसके साथ इफ या वेदर इस्तेमाल करेंगे। और इफ या वेदर के बाद फौरी तौर पे या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या इट आएगा या देयर आएगा, कभी भी इज एम आर वॉज वर नहीं आएगा। ये यू कौन था? यू इज द सेकंड पर्सन, इट ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, यानी जिनसे ये बात कही जा रही होती है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ they were ready. फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा आपने फुल स्टॉप यूज करना। ये हमेशा आपका फुल स्टॉप यूज होगा इन इनडायरेक्ट स्पीच। सिमिलरली, सेंटेंस विद does. He said to me, comma, inverted comma, do you like ice cream? Question mark, inverted commas, close. क्या इसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है? Of course. Do you like ice cream? Yes or no? तो इसका मतलब ये helping verbs वाले। So the indirect speech would be, he asked me, ask के साथ कभी to नहीं लगाएंगे। से yes, if से he asked me if, अच्छा जी, ये यू किसके हिसाब से चेंज होगा? यू इज द सेकंड पर्सन, ऑलवेज चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ही आस्क्ड मी इफ, शाबाश मारिया, इफ आई, डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल में जब भी आप सवाल शुरू करते हैं डू या डस से शुरू करते हैं। सो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होता है, और पास्ट में याद रखें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। मारिया, वेल डन। शहजाद, गुड। ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड, LIKED, इफ आई लाइक आइस क्रीम, फुल स्टॉप। बेटा अभी WH क्वेश्चन की तरफ मैं आया नहीं हूं, मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। सो अगेन हैव और हैज का भी इस तरह कर लेते हैं। ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, have the students finished the lecture? तो have और has किस में कन्वर्ट होते हैं? ये बाहर said है, have और has कन्वर्ट होंगे had में, मगर ये सवाल है, ये भी ना भूले। he asked if the students, if के फौरी बाद नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, देयर आएगा या इट आएगा। if the students had finished the lecture, full stop। इनडायरेक्ट स्पीच कभी क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं होगी, हमेशा Finish the lecture. So dear student, this is how we shall deal with those questions जिनके जवाब आप हाँ या ना में
दे सकते हैं। Sir, जी जी, can we use the word inquired इस वाले केस में? He inquired. inquired या asked या interrogated as per the context बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओके जी, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द WH क्वेश्चन। अब WH की बारी है। Dear students, when it comes to WH question, the technique is a bit different. WH. इसके अंदर याद रखें कि WH क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो एज इट इज रिपीट हो रहा होता है, एज इट इज रिपीट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, he said, comma, inverted commas, why are you late? So dear students, सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला है वो देख ले। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका मतलब कोटेड स्पीच के अंदर इज एम आर वॉज या यहां पे यू है। सेकंड पर्सन यू हमेशा ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, मगर मुझे ये पता ही नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट कौन है। आई डोंट नो। सो जब भी ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो इसको हमेशा खुद पे लिया करें ताकि बात आसान हो जाए। सो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्ट मेंशन हो। सो दैट यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं एज्यूम ही करूंगा कि ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, मैं खुद पे ले रहा हूं। सो द इनडायरेक्ट स्पीच वुड बी ही आस्क्ड व्हाई डियर स्टूडेंट, यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव ना तो मैंने दैट से करना है, ना ही मैंने इफ और वेदर से करना है, बल्कि यहां पे क्वेश्चन वर्ड एज इट इज रिपीट होता है। अमीना बेटा, वाई से पहले कभी दैट ना लगे। सो यहां ना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट यूज होता है, ना ही इफ या वेदर यूज होता है। क्वेश्चन वर्ड एज इट इज आ जाता है। सिमिलरली, he said, comma, inverted comma, and my job. It means and occupation or profession. Full stop. So dear student, this is another way. एफपीएससी जो आपको डायलॉग्स दे रहा है, जरूरी नहीं है कि आप वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हार्ड एंड फास्ट रूल्स अप्लाई करें। इट इज गुड टू अप्लाई दोस हार्ड एंड फास्ट रूल्स, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। सर अगर हम यू कैन गो फॉर दिस डायरेक्ट वर्जन। जी Sir, but if we do it in that way, the original way, जैसे the police women interrogated about my name, where I lived, and what I did, so that is देखिए, also हाँ यस, देखिए बेटा, what I did से जो है मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि मैंने क्या किया था। अब उसने ये तो नहीं पूछा था कि आपने क्या किया था, वो पूछ रही है कि आप क्या करते हैं जिंदगी गुजारने के लिए। व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। तो इसलिए ये ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन मैंने लिखा है। नो, वी आर स्पीकिंग अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। यही काम हमने कहां पे किया था? यही काम हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में किया था। इफ यू रिमेंबर, हम पढ़ क्या रहे थे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नो, अटैक इज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड। इसके एंड में देखे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, मगर पीछे कॉन्टेक्स्ट भी तो था। तो हमने ये नहीं कहा कि जर्नल एक्सक्लेम्ड दी है, हमने यहां पे इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस के तौर पे लिया। द जनरल ऑर्डर द सोल्जर्स टू अटैक। सो जरूरी नहीं है कि जो ग्रामेटिकल फॉर्म आपके सामने नजर आ रही हो वो फंक्शन भी वही अदा कर रही हो। तो यहां पे अटैक इज नॉट प्लेइंग द फंक्शन ऑफ एक्सक्लेम्ड विद पैशन, इट इज प्लेइंग द फंक्शन ऑफ एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इसलिए यहां पे मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की टेक्निक इस्तेमाल ही नहीं की। इंस्टेड आई हैव गॉन फॉर द इंपेरेटिव वन। So dear students, it is always the context that supersedes the rules. रूल्स पे हमेशा कॉन्टेक्स्ट बाजी ले जाता है।
वजह डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मकसद क्या है कि मैं उसके अल्फाज डायरेक्टली दोहराना नहीं चाहता, मैं उसके अल्फाज का मफहूम आपको बयान कर रहा हूं। सो हमेशा हम दूसरों के अल्फाज बयान नहीं करते। अगर कोई आदमी गुस्से से चीख रहा हो तो आप कहते हैं बयान नहीं करते जो गुस्से में वो कह रहा होता है। You always go for the meaning. You transfer the meaning what he was trying to communicate. This is the purpose of indirect speech. So context always supersedes the rules. Remember. तो अगर ये मुझसे ये सवाल पूछते हैं सिर्फ इतना ही कि व्हाट इज माय नेम, तो मेरे पास दो तरीके हैं इसे बयान करने के। द पुलिसमैन साइड I can answer it in two ways. The grammatical way would be that doesn't disturb the meaning is the policewoman said what my name was, acceptable and correct. The other way could be the policewoman inquired about my name. दोनों के मतलब में कोई फर्क नहीं है। एक जो है आपका ग्रामेटिकल है that adheres to the rules of the direct indirect speech, and the second one is the contextual approach which also clears the meaning. तो आप इन दोनों में से फैसला करें कि कौन सा मौजू होगा जहां से मीनिंग क्लियर हो रहा है, गो फॉर दैट वर्जन। So in English language, it is not always possible to apply rules. Sometimes you have to rely on the context and you become direct. Any confusion, dear students? Now coming towards the exercise. Sir, I want to ask कि कभी तो FPSC पैराग्राफ फॉर्म में डायलॉग दे तो उसमें we can look at the contextual priority. लेकिन Yes. अगर सिंगल सेंटेंस दे तो क्या उसमें भी हम contextual priority देख अच्छा, yes, it's a good question, dear students. So far as PMS examinations are concerned, PMS पंजाब की बात करूं, वो सिंगल सेंटेंस ही चल रहा है, उसमें ग्रामेटिकल वर्जन ही चलेगा। However, in FPSC, you can utilize both versions. So dialogues में आपके पास डायरेक्ट वर्जन की ऑप्शन मौजूद होती है। So one such example I present to you in CSS 2015, जब बगैर किसी अनाउंसमेंट के उसने कोर्स चेंज कर दिया और आपको सिंगल सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं दिए बल्कि उसने पैराग्राफ की फॉर्म में दे दिया। So that was the last question and perhaps the most challenging question. तो अब बात जो है मैं बहुत पुरानी कर रहा हूं, 2015 की। Have a look at the instruction. Share screen, share screen. Instructions जरा गौर से मुलाहिजा फरमाएं। Rewrite one of the following passages converting what is in direct speech into indirect and what is in indirect speech into direct में उसे आप डायरेक्ट में करेंगे। सबसे पहले इस पार्ट 2 को मैं देख रहा हूं। I hope the screen is visible, dear students. Miss Andleep said she thought English food was lovely and that she was preparing a questionnaire to be circulated to the students of the university with a view to finding out their eating preferences. Now tell me, is this paragraph written in direct speech or indirect speech? Sir, indirect. Of course, ये indirect में मैंने डायरेक्ट स्पीच में लेके आना, तो डायरेक्ट स्पीच पे मैं कैसे लाऊंगा? So I would utilize the commas and inverted commas in this way. Hold on. Let me copy and paste.
Right. Miss Andleep said, G. I will open the previous paper again. Okay, dear student, now listen. Miss Andleep said, comma, inverted commas. I will put a comma over here and then there is inverted comma. Now tell me, ये she जो है ये मिस अंदलीप थी, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यूज करूंगा तो फिर मैं क्या लिखूंगा? It is always I. So Miss Andleep said, comma, inverted comma, I. Think में, I think English food, G. Now which one? English food is lovely. यहां पे इसने was use किया है. So I must go for is. So Miss Andleep said, comma, inverted comma, I think English food is lovely. Full stop, ये and that कार्ड दे. And that से मुराद है and further added. तो ये जो and that है इसकी जगह पे मैं full stop यूज करूंगा. I am preparing, मारिया बिल्कुल सही किया. I am preparing a questionnaire सिंपल स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, या ये भी एक्सक्लेमेटरी है, उसके जज्बात का इजहार है? हाय, कितने अफसोस की बात है, मिस अंदलीप ने कहा. एग्जैक्टली जी, दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी. सो आपने इसे कैसे करना है? At this, Miss Andleep exclaimed with sorrow that it was very bad. Expressed her disappointment. अगर आपने मीनिंगफुल करना है, ये वर्ड्स नहीं रिपीट करने हैं, तो मीनिंग भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं. इस पर मिस अंदलीप ने अपनी मायूसी का इजहार किया. So it is up to you. At this, Miss Andleep expressed her wonder that it was too bad, or at this, Miss Andleep expressed her disappointment. Full stop. So both versions are correct. वजह कि मैंने आपको मिस अंदलीप की फीलिंग्स जो है कन्वे करनी है, उन्होंने अपनी मायूसी का इजहार किया. सर जी सर, क्या ये जो हमने नीचे डायरेक्ट स्पीच जो है इसको पैराग्राफ इन दिस क्वेश्चन 100% पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है. इसको यहीं से जोड़ के लिखना है. ये प्रेफरेंसेस पे जैसे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, किसी के आगे से आपने लिखना शुरू कर देना. सर ये काइंडली अगर आप इसके उस पे वर्ल्ड पे फाइल पे करके अगर दिखा दें सर. क्या कर दो जी? वर्ल्ड फाइल पे अगर इसको चेंज कर दें सर, जैसे आपने पहले किया था कॉपी. ये भी बेटा मेरे पास कॉपी पेस्ट हो नहीं रहा है. So there are some internet issues. Not really the internet issues. There are some issues in my software. So मैं जी आपको वर्ड फाइल पे करके भेज दो. 2015 का बेटा ये पेपर है. So 2015. So dear student, this is your assignment for today. ये आपने असाइनमेंट कर दिया और बेशक व्हाट्सएप पे या पोस्ट कर दे. One paragraph. This is what you have to do right now, right today. And the next one is, the assignment is this one. As you can see on the screen, this is the assignment of single sentence. ये single sentence बेटा assignment है. और ये वो सवालात है जो इंटरव्यू में आपसे पूछे गए थे और आप अपने दोस्त को बयान कर रहे हैं कि मुझसे सवालात कौन कौन से पूछे गए. So how would you write it in indirect speech? Yesterday you had a job interview. Tell a friend in indirect speech what the interviewer asked you. Write answers in front of your question. Where are you from? लिखना कैसे है? The interviewer
ask me where I was from, full stop. इस तरह आपने लिखने चाहिए. ये सारे सिंगल सेंटेंसेस और सारे क्वेश्चंस हैं. This is how you will attempt. How old are you? The interviewer asked me how old I was. Can you drive? The interview asked me if I could drive. Can you drive जो है yes no question है. जवाब yes में भी दिया जा सकता है, no में भी दिया जा सकता है. This is the next assignment that you will do today right now in the class. So I'm posting it in your group. जी शादा भाई, you have a question? ये सर मैंने ये पूछना था कि आज आपने क्लास में क्या पढ़ाया. मैंने अभी सिर्फ 10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है. बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाई है. That's it. सर आप प्लीज आज की क्लास की जो लेक्चर की स्लाइड्स हैं आप ग्रुप में पोस्ट कर देंगे. जी जी, I'm posting it. I'm posting it. ओके, थैंक यू सो मच. Sure. Okay, dear students, so I give you 30 minutes to solve this question. Then I get